और यहाँ पे आपका टरबाइन है और एक घुमाया जा रहा है स्थलमंडल के ऊपर। तो इस तरह जब हम वायु की एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं तो उसको ऑनशोर एनर्जी कहा जाता है। जो विंड टरबाइन हार्नेस द एनर्जी ऑफ मूविंग एयर टू generate electricity. ऑनशोर विंड रेफर टू टरबाइन लोकेटेड ऑन द लैंड, अर्थात स्थल भाग के ऊपर जब हम इस तरह बिजली उत्पादन करेंगे तो वो ऑनशोर हो जाएगा। ऑफशोर के बारे में आपको बता दूं, ऑफशोर जो है, ऑफशोर टरबाइन आर लोकेटेड आउट एट द सी और फ्रेश वाटर, अर्थात यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो कि सागर के ऊपर अगर हम इस तरह बिजली उत्पादन करें उसको हम ऑफशोर बोलेंगे। इसमें ऑफशोर टरबाइन आर लोकेटेड आउट एट सी द फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर के ऊपर आप देख सकते हैं ये सब ऑफशोर है कि यहाँ पे आप जितने सारे यहाँ पे देख रहे हैं ये जो बिजली उत्पादन हो रही है ऑनशोर है, और ये जो है आपका ऑनशोर और ये है आपका ऑफशोर। तो ये आपको याद रखना है। A fixed foundation of the turbine basically is built in shallow water, and whereas the floating wind and turbine is built in deeper water, and where it is foundation um, is the anchored in the seabed and floating the wind arm are still in their infancy. Offshore wind arm must be at least 200 nautical miles from the shore and 50 feet deep sea, ocean sea हमें देखने को मिल रही है। उसी के साथ ऑफशोर विंड टरबाइन जो है प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी व्हिच इज रिटर्न टू शोर थ्रू केबल, यहाँ पे बुरीड इन द ओशन फ्लोर। हमें केबलिंग करना पड़ता है, अगर हम पानी के ऊपर में इस तरह करेंगे तो थोड़ी सी खर्चा भी इसमें ज़्यादा लगते हैं। मैं इसके और डिटेल हम जानकारी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि एडवांटेज ऑफ ऑफशोर विंड्स, इसका क्या एडवांटेज है। मोर एनर्जी, ऑफशोर विंड का एक फायदा वो है कि ऑफशोर जो आपका बेसिकली पानी के ऊपर, क्योंकि आप जानते हैं सागर में कहीं ना कहीं हवा चलते रहता है। सागर या नदी के बीच में अगर आप खड़े रहेंगे, अगर नाव में जाएंगे, देखेंगे कि वहाँ पे हवा चलते रहती है। अगर हवा चलेंगे तो वहाँ पे बिजली उत्पादन में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरा आवाज़ सुनाई दे रही है, लाइव चैट ऑन है, आप लाइव चैट के जरिए मेरे को रिप्लाई दे सकते हैं, लाइव क्लासेस हैं। एडवांटेज ऑफ ऑफशोर विंड्स की अगर बात करें, मोर एनर्जी एंड कैन बी captured by the building wild mile that are bigger and taller than their offshore outer part basically, and because they are typically located far offshore they have a far lower impact and other neighboring nation, allowing the estimate of the large farm per square miles, and there are no physical containts such as the hill and building and that could hinder that wind flow, and there is the typically significantly higher wind and speed force and out of sea, allowing for the more energy to create at time। बेसिकली ऑफशोर जो विंड मिल है जो पानी के ऊपर में इस तरह देखने को मिलती है, और यहाँ पे फायदा वो है कि आपका ज़्यादा मोर एनर्जी जनरेट होते हैं, और उसी के साथ यहाँ पे खर्चा भी थोड़ा ज़्यादा लगते हैं एस्टिमेट जो है। और मेरा आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही है। इसके कारण क्या हो रही है कि यहाँ पे जो है आपका देयर आर नो फिजिकल constraints such as the hill bounding building that could hinder। यहाँ पे कोई बाधा नहीं है, हवा इजीली आ रही है और ऑल टाइम आ रही है, और जिसके कारण क्या हो रही है, यहाँ पे बिजली उत्पादन भी ज़्यादा हो रही है। नेक्स्ट हम जानेंगे इसका डिसएडवांटेज के बारे में, क्योंकि डिसएडवांटेज जो है आप जान सकते कि डिसएडवांटेज ऑफ ऑफशोर विंड जो मैंने आपको बता रहा था कि पानी के ऊपर में आपका विंड मिल को प्रतिस्थापित किया जाता है स्टैंडिंग मोड में, तो पानी के ऊपर में होगी तो यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे डिसएडवांटेज के बारे में। आपको कोई भी परेशानी होगी, लाइव चैट ऑन है। डिस्प्ले क्वालिटी मैं बार बार बोलता हूँ, यूट्यूब में अगर वीडियो देखना है लाइव क्लासेस तो आप स्क्रीन में टच करेंगे, ऊपर में देखिए एक सेटिंग ऑप्शन है एडवांस सेटिंग। एडवांस में जाके आपके क्वालिटी 480 या 540 या 720 में एचडी क्वालिटी में आप देख सकते हैं, अगर आपका इंटरनेट स्पीड अच्छा है, ताकि इसमें क्लियर आपको दिखेगा। चलिए यहाँ पे डिसएडवांटेज ऑफ ऑफशोर विंड की अगर बात करें, द एक्सपेंस इज एन द ऑफशोर विंड फार्म मेजर आपका
ड्रॉबैक देखने को मिलती हैं। ऑफशोर विंड्स फार्म कैन बी एक्सपेंसिव, जो कि मैं पहले ही बोला, थोड़ी सी एक्सपेंसिव तो होंगे। एक पानी के ऊपर टावर बनाना, उसके ऊपर टरबाइन बनाना, तो खर्चा तो होंगे। एंड कई बार इसमें डैमेज का भी पॉसिबिलिटी रहता है। एंड एक्सट्रीमली हाई स्पीड विंड, जब तेजी से हवा आते हैं तो इसको बंद करना पड़ता है। जैसे हरिकेन या स्टॉर्म या साइक्लोन टाइप कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, तो क्या होगी, सागर के ऊपर से जब तेज हवा आएगी तो कोस्टल एरिया में दिक्कत पैदा होगी। तो आप टरबाइन को अगर घुमाएंगे तो उसमें डैमेज होती है। मैं खुद देखा हूँ बहुत सारे जो कोस्टल लाइन में बनी हुई है हमारे भारत, बहुत डैमेज होते हैं जब साइक्लोन आते हैं, तो वहां पे ये डैमेज देखने को मिलती है। और रिसर्च ऑन हाउ ऑफशोर विंड फार्म इफेक्ट द बर्ड्स, कई बार मेरीन वहां पे सागर के किनारे बहुत बर्ड्स वगैरह, चिड़िया वगैरह घूमते रहती है, वो भी ब्लेड में आ जाते हैं, तो वो भी खत्म होता है। तो कहीं ना कहीं इसका डिसएडवांटेज भी है। एंड बिल्डिंग ऑफशोर विंड्स फार्म क्लोज ब्लीच, एंड वो ब्लीच के क्लोज होते हैं, एंड मे नॉट बी पॉपुलर विद द लोकल बिकॉज इट मे लोअर प्रॉपर्टी प्राइस एंड discourage the tourist basically. एंड एडवांटेज ऑफ द ऑनशोर विंड्स की अगर बात करें, ऑनशोर जो आपका स्थल मंडल के ऊपर पहाड़ी के वैली में या किसी नदी के साइड में, किसी माउंटेन एरिया में, ये एडवांटेज जो ऑनशोर वाला जो विंड्स है, जो आपका हवा का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो इसमें ऑनशोर विंड्स फार्म आर जनरली एक्सपेंसिव एंड enabling for the large scale wind टरबाइन फार्म। यहाँ पे हम बहुत ज्यादा मात्रा में हम विंड टरबाइन यहाँ पे दिखा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, हम 25 30 50 हम इजीली स्थल मंडल में किसी भी जगह में फिट कर सकते हैं। लेकिन जो जल मंडल में थोड़ी सी दिक्कत होती है। एंड लेस वोल्टेज ड्रॉप ऑफ ऑन द केबलिंग इज पॉसिबल ड्यू टू द विंड मिल एंड क्लोज प्रॉक्सिमेटली टू द कंज्यूमर, एंड कंपेयर टू बिल्डिंग ए न्यूक्लियर पावर प्लांट, आपका न्यूक्लियर power plant and which can take over 20 years installing the wind turbine जो है few months। एंड इसका भी डिसएडवांटेज है, हम बात करेंगे यहाँ पे। डिसएडवांटेज की अगर बात करें इसका, basically the fact that many people find offshore winds farm to be blight on the landscape is one of their major problems basically. And they frequently experience low wind speed and physical obstruction like hill, like the building, which prevent them the producing electricity all long year। कई बार देखा जाता है कि यहाँ पे obstacle भी आते हैं, या the noise produced by the wind turbine is compared to the noise that allow more and frequency create adjustment communities। and also working of the wind turbine की अगर बात करें, wind turbine जो काम करता है, इसके बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहूंगा, क्योंकि ये आपको जानना है। जो वर्किंग ऑफ विंड टर्बाइन जो बेसिकली है, wind turbine convert the kinetic energy and in the wind into mechanical energy, and this mechanical power can be used for specific task and on the generation, and can convert this mechanical power into the electricity. And most turbine have three their design blade also, and the energy in the wind turbine 2 or 3 propeller and like the blades around the rotor, that is the connect and to the main shift also। एंड यू सी, आप देख सकते हैं कि ये 3 बेल्ट जो है यहाँ पे कनेक्ट रहता है, आप देख सकते हैं। एंड 3 मेन जो वेरिएबल डिटरमाइन द लो, डिटरमाइन हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी ए टर्बाइन कैन प्रोड्यूस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउ मच ये जनरेट हो रही, कितना विद्युत जनरेट होगी। एंड द विंड स्पीड डिपेंड ऑन द विंड स्पीड, वायु कितना तेजी से आ रही है। विंड स्पीड स्ट्रॉन्गर विंड्स एंड प्रोड्यूस मोर एनर्जी, अगर वायु के स्ट्रांग है और आते जा रहे हैं तो वहां पे बिजली उत्पादन भी ज्यादा होगी। विंड टर्बाइन जनरेट एनर्जी एट द स्पीड 4 to 25 मीटर पर सेकेंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ब्लेड रेडियस जो है, ये जो ब्लेड आप देख रहे हैं, ये जो ब्लेड है, इसका जो रेडियस, ये भी इंपॉर्टेंट है। द लार्जर द रेडियस ऑफ द ब्लेड, द मोर द एनर्जी प्रोड्यूस, एंड डबलिंग द ब्लेड रेडियस कैन बी रिजल्ट इन द 4 टाइम मोर पावर। एंड एयर डेंसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वायु आते हैं तो टर्बाइन घूमते हैं, क्लियर। तो एयर डेंसिटी बेसिकली heavier air exists and let the rotor, and also air density is a function of altitude and also temperature and pressure, and high altitude location have low pressure and the lighter air, so they are less
and also production turbine location, the dense heavily are near the sea level. अगर वो सी समुद्र के किनारे है तो वहां पे हवा का जो डेंसिटी है वहां पे देखने को मिलेगी। तो बेसिकली इसको याद रखना है जो हमने बताया। नेक्स्ट द स्टेटस द विंड एनर्जी इन इंडिया की अगर बात करें, इंडिया विंड एनर्जी सेक्टर इज लेड बाय द इंडिजीनियस विंड पावर, इसको याद रखेंगे। एंड इंडस्ट्री हैज सून द कांस्टेंट प्रोग्रेस, जो हमारे भारत में कॉन्स्टेंटली प्रोग्रेस कर रहा है wind energy, and the expansion of the wind industry has result, and they are at the resulted in a strong ecosystem and the project and operation capabilities and manufacturing based on the about lagbhag 10,000 megawatt per annum. And also the country currently has the fourth highest wind installed capacity and in the world, and total installed capacity 39.25, जो कि काफी ज्यादा है मार्च 2021 के अनुसार, काफी लेटेस्ट डेटा के साथ। एंड हैज द जनरेट अराउंड लगभग 60.49 बिलियन ड्यूरिंग द लास्ट 22-21, जो रिकॉर्ड कह रहे हैं कि विंड का इस्तेमाल हमारे भारत में काफी तेजी से बढ़ रही है। एंड कंपाउंड द एनुअल ग्रोथ रेट फॉर द विंड जनरेशन हैज बीन 11.39 बिटवीन 2010 एंड 2020। 2010 एंड 2020 देयर आर द इंक्रीज, वहां पे चेंज देखने को मिल रही है 11% के ऊपर जो कि विकास हुई है। एंड अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल रिसोर्स MNRE, इंडियन कैन जनरेट द 127 जो कैपेसिटी ऑफ सोर विंड्स के एनर्जी विद द 7,600 किलोमीटर ऑफ द कोस्ट लाइन, वो भी काम हो गई है। एंड अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी विंड एनर्जी इन द टोटल विंड एनर्जी पोटेंशियल लगभग कितना है ना आपका, लगभग है आपका 302 से लेके 100 मीटर आप I8, जो मोर देन 95% कॉमर्शियली जो है वो डेवलप कर रही है। यहाँ पे अगर स्टेट की बात करें, जिसमें आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु, ये जो स्टेट है काफी अच्छा तेजी से बढ़ रही है। और यहाँ पे गुड इवनिंग, यहाँ पे बहुत सारे कमेंट देखने को मिल रही है और मेरा आवाज क्लियर सुनाई दे रही है, जरूर कमेंट करें। और लाइव क्लास ये जो सेशन हम चला रहा है ये कैसा लग रहा है, भारत के संपूर्ण भूगोल में हमने शुरू किए इकोनॉमिक्स से, रिसोर्स से, और सारी धीरे धीरे भारत के नदियां सब चीज हम खत्म करेंगे सिलेबस में, जो है यूपीएससी जियोग्राफी, इंटरनेट और भारत के भूगोल के सिलेबस हम देख रहे हैं कि पूरा खत्म हो जाए हमारे चैनल में। जरूर आप प्लेलिस्ट विजिट करें, हमारे चैनल में जो प्लेलिस्ट है वहां पे आप देखें, बहुत सारा वीडियो मिलेगी आपका कंप्लीट। एंड पॉलिसी रिलेटेड जो विंड एनर्जी है इसके बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे। यहाँ पे देखिए, आपको लगता है कि इंटरनेट ऐसा नहीं है, हमने यहाँ बनाया गया है, ये प्योर पॉइंट को सेट किया गया है कि आपको हम क्या क्या बातें रखेंगे, कंटेंट जो है। एंड नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिसी रिलेटेड टू द विंड एनर्जी, जिसमें नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी क्या है इसके बारे में आपको मैं बता दूं। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी, जो कि 2018 is the provided framework for the promotion of the large grid connected wind solar, जो कि hybrid system for the optical and efficient utilization of the wind and solar resource and transmission and infrastructure and land. Basically, it is very important for our India, the national wind solar hybrid policy. And their next of all, their very interesting policy, they are the national ऑफशोर विंड्स एनर्जी पॉलिसी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। द नेशनल ऑफशोर विंड्स एनर्जी पॉलिसी वाज नोटिफाइड October 2015, basically within the objective develop the offshore winds energy is the Indian exclusive economic zone, basically along the Indian coastal line, जो कि 7,600 किलोमीटर समुद्रीय तट में इसको बनाने का जो प्रयास जो हमारे भारत में आवाज क्लियर आ रहा है सर, थैंक यू, यहाँ पे चल रहा है। एंड नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी 2015 जो है, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया इंटरेस्ट जो कि विकास करने के कोशिश में लगे हैं, और ऑप्टिमम एक्सप्लोरेशन ऑफ द ऑफशोर विंड्स एनर्जी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द नेशन एंड अचीव ऑफ द फॉलोइंग सम ऑब्जेक्टिव्स। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं नेशन के लिए? टू एक्सप्लोर एंड प्रमोट द डेवलपमेंट, यहाँ पे याद रखेंगे, टू एक्सप्लोर द प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ ऑफशोर विंड्स farm in the inclusive economic zone and country including those the under public private partnership. Very interesting. Next, number one, next another point, the reduce the carbon emission by the switching of the offshore winds
energy from the hardness and the wind generation electricity on the large scale. It is very important. And to promote the investment is the energy infrastructure and achievement energy and security. It is very interesting. And next, another to the approach with the appropriate initiative क्या क्या लिया गया है. Appropriate initiative जो है ये basically there are the encourage the spatial planning के आधार में and the management of the nation offshore renewable energy basically source in the exclusive economic zone and to promote their country develop of the offshore wind technology also. And to encourage the offshore wind energy research and development, you see there are the research and development to increase the employment and the availability of the trained labor in the offshore wind energy industry, क्योंकि जानकार लेबर हमें चाहिए जो employment in the availability the trained labor in the offshore wind energy industry to promote the growth of the offshore wind industry project, क्योंकि नदी के ऊपर सागर के ऊपर इस तरह बनाना काफी टेक्निक के साथ काफी एक्सपर्ट के साथ इसको क्रिएट किया जा रहा है. टू क्रिएट एंड द मेंटेन द कोस्टल सप्लाई chain and infrastructure necessary support both of heavy fabrication and the construction work as well as the operation and maintenance and the active offshore wind energy sector. It is very important. And another, the Indian government has decided to encourage the development of the offshore winds in the country due to presence of 7,500 किलोमीटर लॉन्ग कोस्टलाइन जो हमारे भारत में सागर के तल में लगभग सागरीय जो कोस्टल एरिया है 7,500 किलोमीटर एरिया को सर्वे करके यहाँ पे बनाया गया है. यहाँ पे द बेसिकली मेन डिक्लेरेशन द मीडियम द लॉन्ग टर्म लार्जेस्ट ऑफ द ऑफशोर विंड पावर कैपेसिटी जो कि लगभग 2022 से और एंड लगभग 32 by 2030 ये जो टारगेट है. इन अक्टूबर 2015 द मिनिस्ट्री केम आउट द नेशनल ऑफशोर विंड पॉलिसी टू मेक द advantage there are the offshore wind power potential in the Indian exclusive economic zone and along the Indian coastal line. The National Institute of Energy जो कि wind energy is in the phase of conducting the offshore wind potential study and the initial study have revealed good potential on the coast of Tamil Nadu and Gujarat. ये जो तमिलनाडु और गुजरात में प्लानिंग लिया गया है 7,500 किलोमीटर के जो ऑफशोर विंड मिल चालू हो रही हैं फॉर द फ्रेज विंड क्वालिटी मेजरमेंट एंड द लीडर हैज बीन इंस्टॉल्ड नियर द गुजरात कोस्ट. ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहा है हमारा देश. एंड एनकरेज्ड बाय द क्वालिटी ऑफ ऑफशोर विंड ए प्राइवेट सेक्टर प्लेयर हैज द इंस्टॉल्ड लीडर इन गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात जो कि गल्फ ऑफ कच्छ में गुजरात में एंड फॉर द ऑफशोर विंड resource the measurement and plan are the effort and install the such equipment that the Tamil Nadu and Gujarat survey to understand the oceanography and seabed condition within the identified zone of the coast of Gujarat and Tamil Nadu have been also planned. And very interesting that proposed the first ever the competitive bidding process of the establishment of the first offshore wind project for India and would be capability around 1 जो है यहाँ पे देखने को मिल रही है वाट जो ग्राम वाट एंड गल्फ ऑफ खंबात एंड गुजरात में. एंड ऑल्सो देयर आर द मेरीटाइम जोन जो इसके बारे में भी जानना होगा आपको. देयर आर द 2 मेन मेरीटाइम एरिया है इन द फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया टेरिटोरियल वाटर एंड हुई द generally extended up to 12 आपका न्यूट्रल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो कि बियॉन्ड ऑफ द 12 nautical miles up to the 200 and where under the international law and India has right to construct the structure such as wind farm installation and the National Institute of Wind Energy will act as the nodal agency for the development of offshore wind energy in the country. इसको याद रखना है. एंड कुछ इंपॉर्टेंट जीके के लिए आपको याद रखना है लिस्ट ऑफ द 10 लार्जेस्ट विंड पावर प्लांट इन इंडिया. हमारे भारत में 10 जो बड़े जो हमारे पावर प्लांट है यहाँ पे मुपाल्डा विंड फार्म जो कि 15 से इसमें मेगावाट जो आपका बिजली उत्पादन कर रहे हैं तमिलनाडु में है. कन्याकुमारी कन्याकुमारी एंड जैसलमेर विंड पार्क जो कि राजस्थान जैसलमेर में है. आपका बामनील विंड फार्म जो कि धुले पे है आपका महाराष्ट्र में है.
नेक्स्ट अनदर हम बात करेंगे आपका ढलगांव विंड फार्म जो कि महाराष्ट्र सांगली में है, आपका भांगुसवाड़ा विंड पार्क जो कि महाराष्ट्र आपका सातारा डिस्ट्रिक्ट में है, बास्पीत जो आपका महाराष्ट्र बास्पीत में है, आपका तुलजापुर जो कि महाराष्ट्र उस्मानाबाद में है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एंड आपका मामा तगड़ा विंड पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है, आपका मामा तगड़ा एंड अनंतपुर जो आपका विंड पार्क है आंध्र प्रदेश जो कि नीम बागुला जो एरिया है वहां पर भी है। टॉप स्टेट इन इंडिया इंस्टॉल द विंड पावर कैपेसिटी की अगर बात करें, विंड पावर कैपेसिटी अगर मानचित्र को देखें, इंडिया के टॉप जो कि विंड पावर सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे देखने को मिल रही है, गुजरात, राजस्थान, यहाँ पे आपका महाराष्ट्र, यहाँ पे आपका कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आपका ये जो एरिया है यहाँ पे ज्यादा, और सामपाड़, उड़ीसा, बंगाल, कोस्टल ये जो एरिया है यहाँ पे थोड़ी थोड़ी एरिया में है। तो ये बेसिकली द टॉप स्टेट ऑफ इंडिया इंस्टॉल द विंड पावर कैपेसिटी इन आवर इंडिया, इसको याद रखेंगे। दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको याद रखना है वो है तमिलनाडु, जो कि स्टेट वाइज भी आपको बताना पड़ेगा कि तमिलनाडु में क्या स्थिति में है, जो कि तमिलनाडु टॉप द लिस्ट ऑफ द स्टेट एंड विद द लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड विंड पावर जनरेशन कैपेसिटी इन द कंट्री, एंड शेयर ऑफ विंड लगभग पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वाज अराउंड 28% 2018 के अनुसार। एंड द टोटल विंड कैपेसिटी की अगर बात करें जो कि काफी ज्यादा मेगावाट यहाँ पे देखने को मिल रही है, और टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी जनरेशन भी यहाँ पे आप देख सकते हैं 30,000 के ऊपर। गुजरात की अगर बात करें, गुजरात हाउस द सेकेंड लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड विंड पावर जनरेशन कैपेसिटी इन द कंट्री, शेयर इंडिया पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन लगभग 19% इन 2018 जो कि गुजरात कर रही है। महाराष्ट्र की अगर बात करें, महाराष्ट्र का हाउस इन द थर्ड लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड विंड पावर जनरेशन है कैपेसिटी इन द कंट्री महाराष्ट्र में। कर्नाटका की अगर बात करें, कर्नाटका हाउस इज द फोर्थ लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड इन द पावर जनरेशन कैपेसिटी। राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान हाउस द फिफ्थ लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड विंड द पावर जनरेशन कैपेसिटी, 20% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है यहाँ पे इन द स्टेट राजस्थान। तो ये आपका महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान ये स्थिति देखने को मिल रही है। अनदर अगर हम इसको पाई सर्कल डायग्राम में देखें, यहाँ पे मिनिस्ट्री का जो रिपोर्ट है इंडिया क्यूमुलेटिव विंड पावर इंस्टॉलेशन बाय द स्टेट ऑफ परसेंटेज की अगर बात करें, क्यूमुलेटिव विंड इंस्टॉलेशन जो है लगभग 37.7 मेगावाट की, जो मध्य प्रदेश आप देख सकते हैं 7%, आंध्र प्रदेश 11%, राजस्थान 11%, कर्नाटका 13%, महाराष्ट्र 13%, गुजरात 20%, तमिलनाडु 25%। अर्थात टॉप मोस्ट जो हमारे जो विंड मिल है सबसे ज्यादा गुजरात और तमिलनाडु टॉप में है। तमिलनाडु के बाद गुजरात जो कि पावर रिसोर्स आपका विंड रिसोर्स जो है बेसिकली विंड एनर्जी जो है उसको इस्तेमाल कर रहा है। धीरे धीरे चाहूंगा कि आप सब इसके बारे में मॉडल बनाएं, घर में हमारे जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है इसका उपयोग करें और इसके लिए भी आप सोचें। आगे हम यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग जो कि क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, 10 लार्जेस्ट विंड पावर प्लांट, जो कि कई बार मैचिंग भी आता है, कहाँ पे है कौन सा पावर प्लांट, विंड में पावर प्लांट जो है वो कहाँ कहाँ पर है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे ताकि आपको जो कंपटीशन एग्जाम में भी आप अच्छा से एग्जाम दे सके और आपको गलती ना हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं विंड पावर प्लांट जो कि आपका घनसू जो चाइना में है, और आपका अल्टा जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में है, आपका मुपांडल विंड फार्म जो कि तमिलनाडु में है, कन्याकुमारी आप देख सकते हैं, जैसलमेर विंड पार्क जो कि राजस्थान में है, आपका लॉस विंटस विंड फार्म जो कि यूनाइटेड स्टेट में है, आपका स्टिफर्ड फ्लैट जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए में है, आपका मेडोज लेक विंड फार्म, आपका रस्को, आपका हॉर्स होलो, आपका टिहा चापी, ये सब बेसिकली मेगावाट के हिसाब से हैं। सबसे ज्यादा जो देखने को मिल रहा है घोंगसू जो आपका चीन में है, यहाँ पे सबसे ज्यादा पावर जनरेट कर रहा है चीन, और अल्टा जो है आपका यूएसए का सेकंड में है, और उसके बाद हमारे इंडिया के तमिलनाडु जो नंबर 3 में देखने को मिल रही है, तमिलनाडु आपका कन्याकुमारी में, और वो है मुपांडल जो विंड फार्म है। ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सोलर एनर्जी, और हम बात करेंगे विंड हब का हो गया। विंड के बाद हम हमारे वीडियो में जैसे हम बोले एक एक करके हम सारी चीज को आपको बताएंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे सोलर एनर्जी एंड सोलर पावर प्लांट जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसका फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेंगे क्या एडवांटेज ऑफ सोलर एनर्जी क्या है, इसका सोलर एनर्जी का एडवांटेज क्या है। बेसिकली अमंग ऑल द बेनिफिट ऑफ द सोलर पैनल
जो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट सोलर एनर्जी इट इज द ट्रू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, ये रिन्यूएबल आपका रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है. इट्स कैन बी हार्नेस ऑलमोस्ट ऑल एरिया द वर्ल्ड एंड अवेलेबल एवरी डे, क्योंकि सोलर जो है हमारे सूरज के किरण जो है ये कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये निरंतर आ ही रहा है, बट इसको हमें यूज करना होगा. एंड हाई एनर्जी यील्ड की अगर बात करें, सोलर एनर्जी हैज ability to live the grid free if all the power generation provide the enough of the home building, and solar power is the pollution free and cause no greenhouse gas to be emitted after installation. Very interesting, there are the solar energy and solar power park in this video. सोलर एनर्जी इन्वॉल्व लो रनिंग कॉस्ट, अर्थात लो रनिंग कॉस्ट एंड ग्रिड टाई ऑफ द कैपिटल टर्न, अर्थात नेट metering. Solar energy basically convection equipment have the longer life and need to leisure the maintenance and the hence provide higher energy infrastructure security. क्योंकि इसका इजीली मैकेनिज्म है, प्लेट बनाओ और उसमें एनर्जी सिक्योर करो, बैटरी में सेव होता है, आप लोग देखे होंगे. और यहाँ पे डिसएडवांटेज की अगर बात करें सोलर एनर्जी के, जो कि एक्सपेंसिव, सोलर एनर्जी मस्ट बी यूज्ड इमीडिएटली अनलेस इट इज स्टोरेज द हाई बैटरीज, एंड कई बार बैटरी सेल डैमेज हो जाते हैं. और यहाँ पे आपका unless it is stored in the huge batteries and off grid solar system that use this battery can be changed throughout the day and to utilize the energy at the night. कई बार बैटरी सेल डाउन हो जाते हैं, तुरंत हम चेंज करने में समय लगता है, तो हमें रात के एनर्जी यूज करने में दिक्कत होता है. Although it is there at the rather pricey and this is the fantastic option for the using solar energy continuously and also use a lot of space. हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू वांट टू प्रोड्यूस द मोर सोलर पैनल एंड यू विल नीड as you want to collect as the much sunlight as possible. And solar panel जो है require to a lot of space. Among the some roof are not big enough to feed the number of solar panel and that you would like to have very interesting associated with the pollution. If there are the solar energy can be linked into pollution and despite there are the fact and that much less than that caused by the other energy source and generation of the greenhouse gases and has been linked to the solar system installation and transportation, and also additionally several damage and also toxic substance are the utilized and the production of the solar photovoltaic system and which may have the indirect negative impact on the environment. It is very important. And solar energy in India की अगर बात करें, पूरे भारत में India has the plenty and the sunshine, क्योंकि आप जानते हैं इंडिया में काफी ज्यादा सनशाइन समय जो है रहता है यहाँ पे, और 3-4 महीना वर्षा के छोड़ के बाकी समय तो मैक्सिमम तो सोलर एनर्जी है ऑलरेडी रिसीव होते हैं. अगर 2A वी कैन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द सनलाइट, देयर आर द फोटोवोल्टिक इलेक्ट्रिसिटी. यहाँ पे 2A में हम सनलाइट को कलेक्ट करते हैं. एक है फोटो वोल्टेक जो इलेक्ट्रिसिटी, सोलर रेडिएशन इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिक यूजिंग द solar photovoltaic and cell. A solar cell is a semi-conducting gadget composed silicon and other material. And solar thermal electricity जो है using a solar collector with a mirror like the surface, and solar thermal energy heat is liquid by the reflecting sunlight onto the collection, and this heated substance is the used to create steam and which in the term generate generate the energy. And also the photovoltaic इलेक्ट्रिसिटी, फोटोवोल्टिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको जानना होगा. यहाँ पे इनसाइड द फोटोवोल्टिक सेल बेसिकली ये माउंटेनिंग सिस्टम मेड ऑफ द एल्यूमिनियम इज यूज्ड टू the mount solar panel and the cell and have two semiconductor layer and one with a positive change and the other with a negative change. That is the very important. And while a solar cell is exposed to the sunlight photon and either reflect of it and flow the straight thought, and it is also absorbed by the it is and the electron are released and from the negative layer of the voltaic and the cell when enough the photon are absorbed by it. So it is the process basically. And the semi counter material, a voltage different is the produced as a result of these liberate and electron moving to the positive layer, and electricity is
produced when the two layers are connected to a external load, basically, because electron flow through their circuit as they pass throughout. And direct current, you see the DC is equal to DC, basically is the generated and converted the alternative current AC by use the inverter. यहाँ पे हम देख सकते हैं ये बेसिकली आप थोड़ी सी फिजिक्स के नॉलेज के साथ इनसाइड द फोटोवोल्टिक सेल बेसिकली यहाँ पे फीड होता है, और आप देख सकते हैं ये जैसे हीट पड़ता है यहाँ पे, तो यहाँ से एनर्जी जो हमारे पावर जो बैटरी रहता है चार्ज होता है, और इस तरह हम उसका बिजली उत्पादन कर रहे हैं, जो कि आपको हमने बताया। सोलर थर्मल जो इलेक्ट्रिसिटी है, इट मेक एडवांटेज ऑफ द concentrate sunlight basically and the transform it into the extremely hot energy basically to create the electricity, and that heat is then the direct through a typical generator basically, and sunlight is focused and captured by the solar collector to heat a fluid, and which in turn the produce and the electricity. The collector shape might take on the number of the different form. The parabolic thought are the most often there are the utilized, very important. And the in a parabolic thought where power plant a glass tube and containing a fluid is placed, and the inside a curved and mirror thought that the reflect and the direct solar radiation on it as a result of concentrate the solar radiation, and the fluid heat up and the hot steam, and that the result is used to turn a turbine to produce the electricity, and the molten salt and the pressure steam and the synthetic oil are obtaining utilize the fluids. So very interesting. And the power generation power generate is the direct current, and they are called the DC, and which convert to the alternative current there are the AC, and which the use the inverter. आप इसमें इन्वर्टर के जरिए आप इसमें AC में कन्वर्ट करके आपने यूज कर सकते हैं. And the state of India said here on the 2022 solar goal target the reach ambitious and install world resource institute this मॉडल सोर्स ये जो हमने लिया वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट से हमें मिला कि टारगेट इंस्टॉल द सोलर कैपेसिटी भारत में जो हमारा टारगेट है वो इस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं, जो कि एक्चुअल इंस्टॉल्ड सोलर एनर्जी कैपेसिटी very poor condition 5.8, and target focus the 100%, and there are the rapidly work in our India all year in the chad or feasible year from the April to March, and there are the continuously blooming and the increase there at the capacity and megawatt watt also, and the cumulative analysis and the study. And you see the India solar electricity generation, you see there are the generation 2012 to 2020, 2012 to 20 there are the increasing the trend solar electricity generation in the billion units, you see there are billion units solar electricity generation. And also government initiative is very important. What is who is action do take the government? The national solar mission is an the significant initiative of the government of India and state government to promote the ecologically sustainable and the growth, and while addressing India energy and secure the challenge basically the Ministry of new and renewable energy, and also is the nodal agency to address India renewable energy issue. And the for purpose of the providing the term of the long renewable energy, and there are the energy development agency basically IREDA. This is very important term is the non-banking the financial institute that fall under administrative there are the judiciary and the ministry. And also establish the National Institute of the Solar Energy as the independent entitled in the body, and creation of the solar park, development of the extreme large solar plant project, and the improving grid connectivity also their infrastructure, and promotion of the solar infrastructure on the canal bank and the canal tank, very interesting. And solar transfiguration of the India scheme for the sustainable rooftop the implication, so is the encourage the rooftop solar power projection in India. And Sarmitra program basically who is the trained qualified worker in need to purchase their renewable energy for the client who has a lot of energy, the green energy corridor and the national green energy program.
And Jawaharlal Nehru National Solar Mission, very interesting, very big success there. Jawaharlal Nehru Nation Solar Mission. The Jawaharlal Nehru Nation Solar Mission is one of the 8 missions under the National Action Plan on the Climate Change. They are NAPCC. It is very important National Action Plan on Climate Change. It was launched 30 June 2008. It was approved 2010 and focusing on the developing that solar energy capacity in India. जो भारत के सौर शक्ति के विकास में 30 जून 2008 में जो अप्रूव किया लॉन्च हुआ था, वो चीज अप्रूव हुआ था 2010 में, एंड व्हिच हैज बीन इंक्रीज द एनडीए गवर्नमेंट टू 100 जो आपका यहाँ पे देखने को मिल रही है, और सक्सेस देखने को मिल रही है द रूफ ऑफ द सोलर एनर्जी जनरेशन ऑफ द 40 यहाँ पे लार्ज द मीडियम स्केल ऑफ द ग्रिड कनेक्टेड द सोलर प्रोजेक्ट्स ऑफ द 60 यहाँ पे दिख रही है मेरा टू अचीव द 15 मिलियन स्क्वायर मीटर ऑफ द सोलर थर्मल कलेक्टर 2017 में, एंड लगभग 20 बिलियन बाय द 22 में, एंड टू डेवलप द 20 बिलियन मिलियन सोलर lighting system of the rural area in 2022. Very big achievement of our India, and so that the clearance given by CCEA, this is the line and the goal of creating of the base 100 and also by 2022. So very latest information, the India cumulative installed power capacity, and you see there are the renewable circle diagram, the renewable including the large hydro and comprise 36.2 in the India total installation capacity, solar accounting for the 9.8% among the renewable resource. And solar accounts like installation capacity, you see there's a coal, basically we are dependent on the coal 53%, and the secondary renewable energy, India availability there 36.2%. So it is very good symbol in our future generation must use the renewable resource. And you see there are the different color combination, the blue color, the large hydro 12.3%, wind power the 10.1, and the solar power 9.8. So definitely must use the wind, solar, hydro, geothermal. It is very important for us. And so let us, there are the international initiative India commitments that as a part of INDC Paris Climate Dal. पेरिस क्लाइमेट इंफॉर्मेशन में आपको बता दूं, एमिशन द इंटेंसिव देयर द जीडीपी जो कि 33% टू 35% में लो हो गए 2030 में फ्रॉम द 2005 के लेवल जो है, टू अचीव अबाउट 40% द cumulative electric power install the capacity from the non-fossil fuel based energy, basically resource by 2030 agenda, and with the help of transfer of the technology and low cost international finance including from the green climate fund. So it is very interesting that in order to promote solar energy, India founded the International Solar Alliance, a group of more than 122 nations, and there the majority of which are sunny nation as the holy particular, especially there between Tropic of Cancer and Capricorn. Very interesting that the sunlight are very used time, the long time topic of Cancer and topic of Capricorn, and to raise the more than US dollar the 100 billion investment required by 2030 for the significant of solar energy development, and to open the door for new technology that are better suited for the needs also. And the major solar India, जो भारत के प्रमुख सोलर पार्क, हमारे सोलर पार्क इन इंडिया आपको याद रखना है, यहाँ पे भाटला सोलर पार्क जो है राजस्थान में है, आपका पभागड़ा सोलर पार्क कर्नाटका, आपका कुरनूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क जो आंध्र प्रदेश, आपका जो एनपी कुंडा आंध्र प्रदेश में है, ये रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट मध्य प्रदेश, आपका चारंक सोलर जो गुजरात में है, आपका कामुथी सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है तमिलनाडु में है, आपका अनंतपुरम जो आपका 2 आंध्र प्रदेश में है, आपका गिलीविडू सोलर पार्क ये भी आंध्र प्रदेश में है, आपका मंडसूर जो सोलर पार्क है ये मध्य प्रदेश में है. इसको याद रखेंगे, जीके के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. भाटला सोलर पार्क इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पार्क है, इसको याद रखेंगे. ये जो भादरा सोलर पार्क है इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पार्क जो लोकेटेड इन इंडिया, व्हिच इज सेपरेट ओवर टोटल एरिया लगभग 14,000 करोड़ एकड़ एरिया देयर एट द भाटला एंड फालोडी तहसील जो कि जोधपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है.
इसको याद रखेंगे। और द रीजन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल, इसको कहा जाता है ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल। ये टर्म को याद रखेंगे, आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन में, पीएससी में। ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल ड्यू टू द क्लाइमेट एवरेज टेम्परेचर इन भडला ओवर बिटवीन 46 to 48 डिग्री सेल्सियस, जहां पे इतना तापमान है, एंड हॉट विंड एंड सैंड स्टॉर्म ओकरिंग द फ्रीक्वेंटली, जहां पे गर्म वायु के साथ आपका सैंड एक जगह से दूसरी जगह दौड़ते रहते हैं। भडला इज द सैंडी dry arid region within the area about 45 kilometer, and the solar park has a total capacity 2245 mega kilo जो आपका वाट जो है यहाँ पे। and when it is full capacity, the operational park will become the world largest fully commissioned जो प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट रेजिंग लगभग कितना करोड़, 3000 करोड़ रुपीस से इसको बनाया गया है। एंड द पावागोड़ा सोलर पार्क जो है, पावागोड़ा सोलर पार्क इज द कवरिंग एरिया बेसिकली 53 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में है पावागोड़ा, जो कि तुमकुर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में है। काफी इंपॉर्टेंट है इसके जगह के नाम। एंड सोलर पावर जो आपका सोलर पार्क जो है, कैपेसिटी की अगर बात करें मेगावाट जो दिख रहा है 2000 से ज्यादा मेगावाट। एंड द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट फोटो वोल्टेइक सोलर पार्क जो है यहाँ पे देखने को मिल रही है आपका भातला सोलर पार्क इन राजस्थान। इट वाज द कंप्लीट 2019 में ये कंप्लीट हो गया। एंड कुरनूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क, कुरनूल अल्ट्रा, ये कुरनूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क जो है ये बेसिकली ओवर द एरिया लगभग 5900 इसमें एक एकड़ एरिया में है, और पनयाम जो मंडल ऑफ कुरनूल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है, और लगभग कैपेसिटी है 1000 मेगावाट के। द पार्क वाज बिल्ड अप, इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें बहुत रुपया 7000 करोड़ रुपया खर्चा हुई है ये सोलर प्लांट। एंड इट वाज कमीशन्ड बाय द 29 मार्च 2017 में, एंड द ऑनर्ड बाय आंध्र प्रदेश सोलर पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के अंडर में ये हुआ। आगे बढ़ते हैं, ये आपका एनपी कुंटा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क, जो कि एनपी कुंटा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क जो है ऑल्सो नोन एज अनंतपुरम अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क इज द सोलर पार्क स्प्रेड ओवर द टोटल एरिया ऑफ 7900 जो एकड़ एरिया में फैला हुआ है। नाम्बुलापुरम मंडल जो है आपका अनंतपुरा डिस्ट्रिक्ट जो कि इंडिया आंध्र प्रदेश में है, और इट वाज कमीशन बाय मई 2016 में ऑनर्ड बाय आंध्र प्रदेश सोलर पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के अंडर में हुआ। आगे बढ़ते हैं, रेवा जो अल्ट्रा मेगा सोलर है, रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर इज द फर्स्ट सोलर प्रोजेक्ट इन कंट्री, हमारे भारत के पहला है। ग्रेट बेसिकली पैरिटी बैरियर एंड द लार्जेस्ट एशिया लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर प्लांट है। और यहाँ पे रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड जो है इन्होंने इस एजेंसी के द्वारा किया गया है, जॉइंटली वेंचर बिटवीन द मध्य प्रदेश एंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड एंड सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं, रेवा इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट इन द इंडिया टू बी सप्लाइंग द पावर टू एन interstate open access customer Delhi Metro, and is the also first projection in the India where solar power would be used in the railway track। ये जो एरिया आपको कुछ कुछ जगह के नाम के साथ आपको याद रखना है ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो, इसीलिए हमारे स्लाइड में सारी नोट्स हम इसलिए दिए ताकि किसी के पास किताब नहीं है, किसी के पास बोलता है मेल करते हैं सर नोट्स भेजिए, तो इससे अच्छा कि हम बताने के साथ साथ यहाँ पे वो चीज भी रहे ताकि आपको नोट्स बनाने में इजी हो जाएगा, आपको एग्जाम क्रैक करने में इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और ये आप कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करेंगे लाइव सीरीज के क्लास। एंड चारनक सोलर पार्क जो है इसके बारे में मैं बता दूं, चारनक सोलर पार्क जो है गुजरात में है, और ये बेसिकली आपका चारनक सोलर पार्क के नाम में ही जाना जाता है, बुलाया जाता है। प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट, इसका जो विकास हुई है 2000 हेक्टेयर एरिया में फैली हुई है, और यहाँ पे आपका चाणक्य विलेज जो पाटन जो डिस्ट्रिक्ट है नॉर्दर्न गुजरात में, दक्षिण गुजरात में ये है। आगे बढ़ते हैं, आपका कामुथी सोलर प्रोजेक्ट जो है आपका फोटो वोल्टेइक पावर स्टेशन है, और सेपरेट लगभग 2500 जो एरिया है आपका कामुथी रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट जो 90 किलोमीटर आपका मादुराई से 90 किलोमीटर दूर में है, और तमिलनाडु जो एरिया। और इसी के साथ आपका कडप्पा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क, कडप्पा ये आपका कहाँ पे है, कडप्पा अल्ट्रा, इसको याद रखेंगे, कडप्पा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क जो कि सेपरेट ओवर ए टोटल एरिया लगभग 5900 जो एकड़ एरिया में मायलाम्बरम जो मंडल एरिया है
Kadapa district, Andhra Pradesh, the project being implemented by the Andhra Pradesh Solar Power Corporation Private Limited. काफी बड़ा एरिया है और ज्वाइंटली काम हुआ है यहाँ पे सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और उसी के साथ आपका कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड जो आपका आंध्र प्रदेश के है, और आंध्र प्रदेश पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आंध्र प्रदेश दोनों मिलके इसको डेवलप किए। अल्ट्रा मेगा सोलर जो पावर प्रोजेक्ट है ये बेसिकली अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क के नाम में जाना जाता है, और सीरीज ऑफ सोलर पार्क में जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसी के साथ इन दिसंबर 2014 में जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इंट्रोड्यूस एस्टेब्लिश किए थे 25 सोलर पार्क जो कि अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क के नाम में एडजॉइनिंग 20 जो है यहाँ पे कैपेसिटी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जियो थर्मल जो हमने सोलर के बारे में जैसे कि आपको सारी जानकारी हमने दे दिए अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट के बारे में, और उसके साथ आपको दे दिए कुडाप्पा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क, उसी के साथ आपका कामुथी सोलर पावर प्रोजेक्ट, आपका चाणक्य सोलर पार्क, रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क, एनपी कुंटा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क, कुरनूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क, आपका पाभागढ़ सोलर पार्क, ये सब जो है आपको याद रखना है। और इसी के साथ नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे वो है जियो थर्मल पावर प्लांट जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और आजकल बहुत ज्यादा ये चर्चा में है जियो थर्मल के बारे में। तो आइए आपको जानते हैं कि जियो थर्मल रिसोर्स बेसिकली देयर आर द थ्री मेजर कैटेगरी है। इसका पहला कैटेगरी है कि जियो प्रेशराइज्ड जोन, दूसरा है हॉट रॉक जोन और तीसरा है हाइड्रोथर्मल कन्वेक्शन जोन। इसका तीन जोन है। एक पहला जोन है आपका जियो प्रेशर जोन, आपका दूसरा है आपका हॉट रॉक जोन, तीसरा है आपका हाइड्रोथर्मल कन्वेक्शन जोन। ये जियो थर्मल रिसोर्स को हमने मेजर तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एंड ऑफ दिस थ्री ओनली देयर आर द फर्स्ट करेंटली बीइंग कमर्शियल बेसिस। और नेक्स्ट ऑफ द नेचुरल एग्जांपल ऑफ द जियोथर्मल गिविंग द गीजर, लावा फाउंटेशन एंड द हॉट स्प्रिंग। यही से ही हमारा जियोथर्मल का इतिहास है। यहाँ पे या गीजर होगी या लावा फाउंटेनिंग होगी या हॉट स्प्रिंग होगी। ये तीन क्राइटेरिया से इसका जो एडवांटेज के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। जियोथर्मल के रिन्यूएबल जो एडवांटेज है यहाँ पे इट इज द बिलीव दैट एनफ हीट इज द radiant from the center of the earth to fulfill the human energy demand all the time to come, and easy to exploit, some cases बहुत ही easy होते हैं। and since the ancient time people have utilized that the source of energy and prepared the meal, heat and their house and take bath and their heat there at the office. Today it is also used to directly heat home to another building, and due to this the geothermal energy is more economically, it is very important. And often the other key benefit of using the geothermal energy, it is does not produce in any pollution and add in the maintaining a clean environment. Carbon dioxide generation is lower than the fossil fuel. Geothermal energy, which is a sustainable resource, has contributed to a decrease the pollution and global warming. And high net energy yield, basically additional unit, and then with the molecular design can be created quickly to meet the rising demand for energy. So the price producing the power is the uh, particularly on far with that traditional energy source. This is the disadvantage भी आपको जानना है, एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज को भी आपको जानना है। नॉट अवेलेबल द एवरीवेयर, ये जो है हर जगह में अवेलेबल नहीं है। जियोथर्मल हॉटस्पॉट जो है आर एरिया scattered and the far away region, then there are the need energy. H2S pollution की अगर बात करें, large quantity of the H2S, the rotinic and gas can be released, and the inhaling into the too many quantities is fatal. Geothermal energy harnessing produces some the water pollution, and also to the most popular modern method of the harnessing geothermal energy is to take the हाइड्रोथर्मल, बेसिकली इसको याद रखेंगे, हाइड्रोथर्मल कन्वेक्शन। हाइड्रोथर्मल कन्वेक्शन व्हिच आर नेचुरल प्रोसेस, दिस इज द व्हिच cooler water and penetrate into the earth crust, it is the heated there and raise the surface.
It is the quite simple to capture the steam that is the produced when the heated water is driven to the surface and used. It is the power selection generator. So it is very interesting. It is a challenging issue, the resource and location. Although the geothermal energy exists, the benefit the entire surface of the planet, not all the in cat use. The feasibility of the installing the geothermal power plant the constrained by the small production proportion by the land and that located above the appropriate pocket of the water stream. It can heat and a home for or the power electrician facility, numerous locations that are suited for the producing significant quantities of geo energy, and that may be transformed into the electricity, are also found in the region that are the quite active technologically business, and they are the very effective. And next also there are the infrastructure of the geothermal electricity is not the commonly used in the United States for the number of reasons, basically including the lack of infrastructure and the insufficient resource. A geothermal energy source could only be utilized to the generate the basic power for an electrical system, and which in and itself the present challenge tools for the digging well and the installing very important. And high cost geothermal, basically geothermal energy is costly and resource to use, and the cost of plant with 1 megawatt capacity range from there at the million and 1 to 7 million. And however, whereas the initiative investment in the sustained and it can be recovered over time by the other investigator. And also renewable does not the mean the unlimited, and the country come on the precision, and there are the limit to the amount of water and the stream, and that may be recovered from any soil, and there is maximum amount of water that can be drawn from the edge well. So it is useful used to water is not the properly injected but oil, and there is the possible for the energy source to the domains as well as the more several geological effect such as the formation sinkhole to occur in the pressure and gradient also. And location restricted, it is very important the fact of geothermal energy. Location basically specific is biggest there are the drawback, because the geothermal plant must be constructed where the energy is available, and some region cannot utilize this resource. Basically, of course, this is the not any easy any issue if you raise the someone like Iceland, whereas the geothermal energy is easily accessible. And their transmission barrier, it is very important. There are the imprac- impractical impractical to transport the steam or hot water more than 2 miles, and the geothermal power facilities must be situated close to the specific place near the reservoir, and the ability of develop to provide the energy and to the grid, and maybe a constant given that many of the best geothermal resource and also situated the rural location. And also environmental side effect is very important. There are the environmental side effect, although there are the greenhouse gases are not normally emitted by the geothermal energy. Many of them are stored the beneath the earth surface and the release into the atmospheric when the drilling take place. And although these the gas are also naturally emitted into the environment, and that red rise the density of the geothermal facility. So the gas emission are still far less than those the brought on by fossil fuel. And also there are the earthquake is very important. There are the earthquake. Additionally, there is the chance that the geothermal energy and will cause the earthquake, and this is because the dizzying has the change and the structure of the earth, and this issue is increasingly common with the enhancement geothermal power. And also they inject the water and earth cast wood and crack, and also greater resource extension. The effect of these earthquake are very necessary. And sustainability, there are the fluid need to inject the back into the underground reservoir and quicker than it is the use of
the older geothermal energy suitable. And this means that the order of ensure stability, sustainability, geothermal energy, and need to be controlled effectively in order to account for the benefits while the minimizing the against the any potential drawback. And industry must weigh the advantage and disadvantage of geothermal energy. So the major site of geothermal energy is India, Puga geothermal field, and the Chumangan geothermal field, and the Manikarma geothermal field, and the Bias Valley, and the Sadlut, Spiti, and Tapopan geothermal field, Chamboli, Uttarakhand, and the Alakanda Valley, आपका तातापानी geothermal field, आपका Salvardi geothermal field, ये very important. And there are the Anhoni, Samoni area, the another, and Ankleshwar, and Godavari, Gavan, and Andaman Nicobar region, and Damodar Valley region, Western thermal province, and the Cambe geothermal region, Konkan geothermal province, आपका Sohana thermal region, Toa and Chapsar geothermal field, Gujarat, आपका लासुंद्रा जियोथर्मल प्रोविनेंस, ये जो सारी आपको याद रखना है। और जियोथर्मल का जो यहाँ पे मानचित्र आपके सामने हमने रख रहे हैं, इसको भी अच्छा से आप देख ले, ताकि ये जो आप याद रह जाएगा, आप भूलेंगे नहीं। एंड द लोकेशन नीड टू मीट द नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट order to suitable for the using the geothermal energy. It must be possible to access a geological heat source that is they are the relative close and to the surface of the shallow depth. And geothermal heat resource can be used in one of two main way. Basically, their location need to meet a number of requirement, and it must be possible to access the geological heat. Basically, the source there are the relative close, there the surface at the shallow depth. So ये hydrological, hydrothermal, and a hydrothermal heat source is the first type. In this case, the heat is transferred to the surface by the water, and which is then the heated by the hot rock and beneath the water, and that has been heated by the seismic or volcanic activity. It is very important. Water is released into the ground by the rain surface and bodies, and all illustration of this the extents of the hot spring in the Iceland, Himalaya, and Alps. And the another issue, the second method of the resource extraction is depth enhanced geothermal system, in which the hot base rocks is raised by the digging a deep before there were which is the field with the water to create the stream that use the power of a turbine. And this method is less common sense, is the expensive to gain the access to the deep basal rock beds. It is very important there are the direct use, and by the directly using such as the nearby the surface, the reservoir geothermal energy is most frequently and historically exploited. And the heating up method has the largest capacity among the direct use techniques. It is the mostly used heat homes and workplace by the pumping water directly into the boiler. And geothermal heat pump are second most the popular direct use the technique. This pump does not need a powerful heat and source from the earth, since they utilize the comparatively low temperature of the surface and the subsurface depth between the 10 feet and 300 feet. As a result, they can be used the practically anywhere in the world, and it make use a minute of the temperature difference between the surface and the subsurface. And under the surface there are the over vertical loops, and the duct system receive that heat from the loops, and which then the absorb in from the earth. The system is switched around the cooling intake heat from the building and send in there are the underground loops, and save also electricity consumption by 30% to the 60%. It is very interesting. And also ocean energy, today's very interesting topic. They are ocean energy, all renewable energy source, and that come from the sea area referred to the ocean energy, and have the tidal, had the ocean, and thermal technologies are the three primary category of the ocean technology. Ocean energy is now
recognized as the renewable energy and by the Ministry of New and Renewable Energy. So definitely there are the type is very important. How many type of ocean energy? First of all, the by transforming the energy contained the ocean wave, and there are the electricity and wave energy is the produce. So to transform wave energy into the electricity, numerous different, and also they are in the uh, vicinity of the Trivandrum, and also there are the wave energy developed has not taken place in any nation, and also force on the ocean wave has not been fully utilized for the human need. And also floating object, there are the position on the ocean surface move up and the down, creating waves. The waves spin the ocean as they move, and high technique device that capture the natural movements of the ocean current and the flow of soil generation the power. And so definitely you see there are the flight, there are the spar, there are the heavy plate, there are the sea floor, and there are the under substation, and there are the cable from the other brows and cable to the shore. So it is very interesting, and the current energy resemble that the wind that blows across the ocean in the many way, and the large and the propeller attached to the sea bait and known as the underwater turbine are the propelled by the marine current to produce the electricity. And given the size of open ocean current and the entry over governmental panel on the climate change and assured the technology that harness lower the velocity currents hold the potential for the large project scale and the growth. So there the tidal energy is very important. Similarly, there are the tidal energy is the similarly to convectional hydroelectric dam. So tidal energy power plant are situated on the river estuarine and the hold back substational amount of the tidal water to is the daily, and which when the release the produce electricity India is anticipated to process. So very interesting, there are the energy potential basically a tide is a regular rise and their fall that can use the utilize the generate electricity and tidal power. So it is as a termed in the context in the place like the Gulf of Kutch, Gujarat, Gulf of Kambe, and the Sundarban area of the West Bengal, where the tide is high enough to allow the building and the suffering and the efficient operation of the tidal power plant. So tidal power has a lot of promise, and tidal can be used as a source of energy by the building a reservoir of the basin behind the barrage and using the water from the tidal. And so sizable tidal have power project with their estimate cost of lagvag 5,000 crore in the plant in the Gujarati Gulf of Kutch. You see there are the structure and the hydro geothermal also. You see the tidal basin and also tidal basin level of the low tides, and there are the level of the high tides and level of the low tides. Both there are the different level of tides. So ocean thermal energy is very important. Another topic, ocean thermal, basically ocean make up the almost 70% of the earth surface, making them the enormous heat and repositors warm surface water and the coldest deeper layer, and can be used to produce the steam, and which can subsequently be converted into the electricity. So the ocean and seas hold a lot of solar energy in the reservoir. And also the tropical water 60 million square kilometer on the average receives solar radiation the heat content, and also produce the reuse the harness the energy ocean thermal energy and run heat energy the green generate the electricity using the temperature variation between the ocean and surface and the depth approximately 30%. So that is the model for the thermal energy generation. One water tank and the approx temperature 25 degrees centigrade. There are the ocean depth 60 feet, and the maximum water return there temperature 16 degrees centigrade. And sometimes there are the cold water intakes and the temperature 5 degrees centigrade, and there suppose the ocean depth in the 300 feet. So it is there are the systematically 100 kilowatt the power generation,
and there are the accumulation on the uh, day by day. And osmotic energy is very important. There the osmotic energy is a method and that harness the flow of water over a membrane separating a fresh water, and reservoir form a salt water reservoir to generate the energy, and another name for the salinity and the gradient energy. It is very important, the osmotic energy. So it is very important, the suggestion, the tidal stream, the tidal stream and ocean current are basically enormous and nearly limitless resource, and that may be used in the relative minor environmental interaction for large scale electricity generation. And India has a vast coastal line, so with the estuarine and the gulf, and that is begun the completely utilized to capture the energy also. And the nation institute of ocean technology in Chennai, and which is part of the Ministry of Earth Science, it is a charge based, and but additional contribution from the either institution will speed up our understanding and development of the technology. So biomass energy, another topic today's live class. Biomass energy is the renewable energy, organic material, and basically plant and an animal known as the biomass, and energy produced or generated by the living or the farming living organism is the known as biomass energy. Biomass energy is a popular fuel in the many nation, इसको याद रखना है, or in the heating and cooking in the understanding in the nation. Basically biomass in many industrialized nation, and to the use of biomass fuel for electricity production and transportation, and the rising as well as the reduced carbon dioxide. And solar chemical energy is stored in the biomass. Biomass is created by plants through the photosynthesis, and direct uh, combustion of the biomass for a heating is also an option. So the different process that turn into the sustainable liquid and gases. So type of the biomass, it is very important the how many type of the biomass. There first of all type the field and plantation biomass, industrial biomass, and forest biomass, and urban waste biomass, and aquatic biomass. ये जो आपका चार टाइप्स है, फील्ड एंड प्लांटेशन बायोमास, industrial biomass, forest biomass, and urban waste biomass. So it is the important the biomass source of energy. Wood and wood processing waste, there are the including firewood, wood piles, and wood chips, and well as the sawdust. So agricultural waste is very important from the agriculture and food processing, such as the corn, soybean, sugar cane, and also there are the woody plants, and waste from the food yard and trees, as well as the paper, cotton, wool contained, and the biological components, and the municipal solid, and also human sewage and animal manure also. And advantage of biomass energy, basically versatile. The biomass energy can have different use, the ranging from the cooking gas and to the generation of power with minimum effect on the environment. So another there are the renewable. It is a renewable source of the energy and can be provided by the nature in imbalance, and also no net the carbon dioxide emission. The emission of carbon dioxide are too less in biomass energy, and then other convectional source of energy. So it is very important, emits less carbon dioxide, sulfur dioxide, and there are the nitrogen oxide, and then fossil fuel. Then the sulfur and nitrogen pollutants are minimal biomass and the consumption. So it is very interesting. And biomass energy has low energy density, and there are some biofuels such as the ethanol and are less efficient than the gasoline and other hand, and the biothermal and made of the corn for example, many not produce not the energy. And land conservation, basically land required for the biomass generation, and maybe demand for the other uses such as the conservation, the housing, agriculture uses, and also their agriculture food output, also the possibility in the loss of biodiversity. And another there are the addition, enforcement and the issue, and also their pollution and nutrients and the depleted soil, erosion of the soil, and additional issue for the water pollution, very and the latest different issue. And also biomass to power, if you see the biomass to power the supply chain battle,
link that could make feedstock unavailable are among the most important barrier of the biomass plant. So the fluctuation or more preciously, it is very rise in the price, the feedstock, the related issue, and these two things can make a project unable. Lack of the adequate policy framework and the effective financing mechanism, lack of effective regularity framework, lack of technological capacity, and absence of effective information and dissemination, limited successful commercial dimension model experience. It is the lack of viable analysis. So biomass to transformation fuel, basically biodiesel. Biodiesel is very important in this context. Very interesting topic today, live classes. And if you are new, must will subscribe my channel. And other hand, you see there are the biomass, and there are the biodiesel, basically on the main problem of the getting the biodiesel program, the ruling in the different link into the initial large scale. Lack of confidence, basically there are the lack of confidence in the pharma due to the daily the nothing and publication and all explanation government and the non-minimal support also, it is very important. And bioethanol is very important for the cost and accessibility of the bio molasses, and are by the most important variable in the manufacturing of the ethanol. It is the state government control the flow of molasses and the frequently impose the restriction, the transfer over state boundaries, and while the central government determine the policy surrounding ethanol blending and the sale of the alcoholic, there are the attract taxes from the different state government also. And there are the different aspect, and also end of their slide today their live classes. Today their live classes, the wind energy and solar energy, and there are the geothermal energy in the India and biomass energy. And definitely today's video, it is very important for UG and PG students, and also who give the UPSC, PSC, and NTA NED also. Thank you guys. Thank you to all for your class, and also thank you. Uh, you are attending, must will attend my another class, must will attend the another video definitely. And there have the many lecture, geography, Indian geography, oceanography, climatology, geomorphology, and NTA lecture series, and also their PhD guidelines video. Thank you guys. Thank you to all. नेक्स्ट क्लास हम आएंगे आपका परसों लाइव क्लास में, जिसमें हम और भी जो टॉपिक है एनर्जी रिसोर्स इकोनॉमिक जियोग्राफी के, वो क्लास भी हम लाएंगे और अपलोड वीडियो भी आपको हम दिखाएंगे। तो आज इस वीडियो में हमने विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी और बायोमास एनर्जी और ओशन एनर्जी भारत के हमने कोशिश किए आपको बताने के लिए। और ये वीडियो उम्मीद है कि आप अच्छा से दूसरे को भी शेयर करेंगे और खुद भी देखेंगे। थैंक यू टू ऑल।